Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will start electrical machines. Another topic, transformer. So, what is transformer? So, सबसे पहले हम जो है ट्रांसफार्मर को देखेंगे, उसके कुछ बेसिक इक्वेशंस को देखेंगे और उसके बाद हम जो है देखेंगे कि अगर हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है. So a transformer is a device that changes AC electric power at one frequency and voltage level to AC electric power at the same frequency and another voltage through the action of magnetic field. ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर आपके वोल्टेज लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है. कीप इन माइंड कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होगी. ट्रांसफार्मर के बेसिकली दो कंस्ट्रक्शन है. वन इज कॉल्ड एज द शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड द अदर इज कॉल्ड द कोर टाइप ट्रांसफार्मर. सो दिस इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड दिस इज अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर. अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इस तरह वाउंड की जाती है. और इस तरह बाउंड करने का मकसद ये है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लीकेज फ्लक्स है वो आपके पास क्या होता है, कम होता है. अब होता क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे प्राइमरी साइड पे आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है. उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से आपके पास अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो जनरेट हो जाता है. वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो आपके इस कोर में ट्रेवल करता है, क्योंकि इस कोर का रिडक्टेंस जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है. तो वो इस कोर में ट्रेवल करता है और वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है. तो जब ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है तो आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है. और अगर सेकेंडरी सर्किट क्लोज हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि उसमें करंट फ्लो करेगा. अब कीप इन माइंड कि प्राइमरी और सेकेंडरी किसे कहते हैं. नॉर्मली ट्रांसफार्मर की जिस साइड पे आप वोल्टेज देते हैं तो वो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी होता है, और जिस साइड पे आप लोग लोड कनेक्ट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करते हैं, तो उसको ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बोलते हैं. ठीक है. इसी तरह ये जो आपके पास शेल टाइप ट्रांसफार्मर है तो इसका कंस्ट्रक्शन ये है कि दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. और दिस प्रोवाइड ए कंप्लीशन पाथ कंप्लीशन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. यहाँ पे ये बात जो है बताना लाजमी है कि चूंकि यहाँ पे फ्लक्स है तो यहाँ पे आपके पास जो है कोर लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस भी होंगे, जिस तरह डीसी मशीन के केसेस में आप लोगों ने देखा था. तो हम लोगों ने ये देखा था कि कोर लॉसेस जो है वो दो तरह के लॉसेस हमने पढ़े थे. वन वाज द एडी करंट लॉस एंड द अदर वाज हिस्टेरेसिस लॉस. सो वी नो हाउ टू टैकल दीज टू लॉसेस, हाउ टू रिड्यूस दीज टू लॉसेस. सो उसमें हमने देखा था कि जो आपके पास ईडी करंट लॉस है वो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो कोर है, उसका एरिया, अगर आप इलेक्ट्रिकल एरिया अगर आप कम करते हैं तो उससे आपके जो ईडी करंट लॉसेज है वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे. सो यहाँ पे ये जो कोर है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये थिन लेमिनेशन से बल्कि बनी है. सो अगेन द थिन लेमिनेशन, द पर्पस ऑफ द थिन लेमिनेशन इज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल एरिया, और इससे होगा ये कि आपके ईडी करंट लॉसेस जो है वो क्या होंगे, कम होंगे. कोर लॉसेस को कम करने के लिए नॉर्मली तौर पे जो मटेरियल यूज़ होता है उसका जो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है. एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि नॉर्मली जब डीसी मशीन की हम बात करते हैं, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो पोल्स हम बनाते हैं, ठीक है, किसी जो डीसी मशीन के पोल्स हम बनाते हैं वो नॉर्मली ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट जो है वो क्या हो, वो ज़्यादा हो. रीज़न ये है कि जब उसका हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो वो एक अच्छा मैग्नेट बनेगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए
मैग्नेटिज्म को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के केस में, कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के केस में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो नेसेसरी फ्लक्स जो है वो प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग में, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें फ्लक्स जो हमें मैग्नेटिक रिटेनिटिविटी है वो नहीं चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक रिटेनिटिविटी नहीं चाहिए, तो इस वजह से आपके जो ट्रांसफार्मर कोर में जो मटेरियल यूज होंगे उसका हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट जो है वो कम होना चाहिए, ताकि वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, बिकॉज हेयर वी डोंट रिक्वायर एनी मैग्नेटिक रिटेनिटिविटी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। दो तरह के स्ट्रक्चर्स है, वन इज द कोर टाइप, द अदर इज द शेल टाइप, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपके फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता, मतलब जो इनपुट्स वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी होती है आउटपुट वोल्टेज की भी सेम वही फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। थ्योरेटिकली जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम लॉसेस को कैटर नहीं करते, उसमें आपका इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। सो क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल कि व्हाट विल हैपन इफ द इनपुट टू अ ट्रांसफार्मर इज डीसी। सो अगर इनपुट ट्रांसफार्मर का डीसी होगा तो फिर क्या होगा कि डीसी के केस में व्हाट वी विल हैव अ डायरेक्ट करंट एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो, and as both cores are stationary, okay, this core is stationary, so once the electric current flows through this coils, तो क्या होगा कि इसमें बिल्कुल ये मैग्नेट बनेगा, फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा, लेकिन वो फ्लक्स भी इन कंडक्टर्स को कट करेगा, बट देयर विल बी नो रेट ऑफ चेंज। So due to no rate of change, because the current is directional current, so the flux produced will be also a unidirectional flux. Sorry. So जब आपके पास फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होंगे तो आपके सेकेंडरी में क्या होगा, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगा, because this phenomena of induced EMF takes place when there is a relative motion or there is a rate of change. So here there is no rate of change in the flux, neither there is a rate of change of motion, there are no relative motion between the primary and secondary of the transformer because both are stationary. एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों ने मैकेनिकल लॉसेस देखे थे डीसी मोटर के केस में, वहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेस थे। तो ट्रांसफार्मर एक वाहिद इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें आपके पास लॉसेस जो है बहुत कम होते हैं, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न ये है कि इसमें मैकेनिकल लॉसेस जो है वो नहीं होते, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज हाउ ट्रांसफार्मर वर्क्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपके पास वोल्टेज है और द करंट इज अल्टरनेटिंग, सो व्हेन दिस अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज टू द प्राइमरी, सो यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स आपके सेकेंडरी कॉइल्स को कट करेगा और उस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होगा, एंड ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सो अगर आपके पास सर्किट क्लोज है तो इट विल जनरेट करंट, ओके। So normally the voltage at the primary side is referred as primary voltage, and the current flow is called the primary. So the voltage at the primary it is represented as Vp, और इसकी वजह से जो current flow हो रहा है that is called the primary current। और जो आप वाइंडिंग करते हैं प्राइमरी साइड पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको प्राइमरी टर्न्स कहते हैं, इसी तरह the windings, the number of turns at the secondary side of transformer is called as the secondary turns, and the current flow and the voltage is referred as the secondary current and secondary voltage, okay. So actually what these two dots represents, these two dots represent the phase relation between the voltage and the voltage in the input and at the output. So जब ये दोनों डॉट्स जो है ये दोनों ऊपर होंगे तो इट्स मीन के आपका जो इनपुट और आउटपुट जो है वो इन फेज है एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस, ओके। और जब ये प्राइमरी डॉट और सेकेंडरी डॉट जो है ये दोनों
लोकेशन पे ना हो तो इट्स मीन कि देयर इज 180 डिग्री आउट ऑफ, दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। लेकिन नॉर्मली जो आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो कोई फेज शिफ्ट जो है प्रोवाइड नहीं करते until and unless if there are some auxiliary circuit, some additional circuit which provide the purpose of the phase shift. Okay. So normally आपके पास frequency input और output की constant होती है, there is no phase shift, the change is just only in the level of voltage. So as I told you people that the input power and the output power is normally constant. So if you are going to step up voltage at the primary तो आपके पास अगर आप सेकेंडरी पे वोल्टेज स्टेप अप करते हैं तो in order to maintain the power constant the current goes down and the current steps down. So there is the power will be remain constant at the input and output. ठीक है, तो इस वजह से अगर आप वोल्टेज स्टेप अप करते हैं तो current will be automatically step down. Okay. Now let's move towards the next slide. So this is some basics relationship. Okay, so first of all the how we can derive these expression. First of all जो है ना आप इस तरह करें कि ये जो आपके पास है this is primary voltage and secondary voltage. तो primary voltage secondary voltage का रेशो जो है वो टर्न्स के साथ इस तरह रिलेट है। इसको सिंपल करने का तरीका ये है, ठीक है, कि सबसे पहले आपके पास जो प्राइमरी जो इनपुट पावर है और आउटपुट पावर है उनको आप इक्वेट करें। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है, वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। ठीक है, सो इससे आपके पास वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू आई एस बाई आई पी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या होगा, सो उसके बाद आप लोग जो है पावर के बाद आप एमएमएफ को फोकस करें। जस्ट लेट मी यूज मार्कर एंड वाइट बोर्ड। सो वी नो दैट द प्राइमरी पावर वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। So you can obtain Vp by Vs is equal to Is by Ip. Okay, this is relation 1. Also we know that the primary ampere turns is equal to secondary ampere turns. So it's mean that NP IP is equal to NSIS. So it means NP by NS is equal to IS by IP. So this is equation 2. Okay. So now यहाँ पे आप देखें कि ये दो इक्वेशन सेम है, तो इट्स मीन के वी पी बाई वी एस इक्वल टू इन पी बाई एन एस। आल्सो जो आपके पास इन पी बाई एन एस है दिस इज इक्वल टू अल्फा। ओके, सो यू कैन से दैट Vp by Vs is equal to alpha, okay, and you can say that Is by Ip is equal to alpha because Vp by Vs is equal to also equal to Is by Ip, and you can say that Ip by Is is equal to 1 by alpha. Okay, so just have a look to these equation, very important equation. You have to remember these equations because these equations will be utilized in the numerical problems we will solve in the upcoming lectures. So very important and interesting relations they are.
So you have seen that how these equations are derived and from where these equations are come. Just you have to remember two facts, that the primary power and the secondary power are equal. Also, the primary impaired terms and the secondary impaired terms are equals, and then you have to derive these relations. Okay. So it is not necessary to know how these equations, from where these equation comes, but you need that how to use these equations. Okay. So now let's talk about the input power and output of a power of a transformer. Here we can write, but keep in mind all these equations are for the ideal transformer, okay? And in practical transformer there are always losses, so these equations may hold, but we can say that there is an approximation, because when we talk about the real transformer, so in real transformer these equation doesn't hold because there are normally losses. But as I told you in the very beginning, that the losses are very low, because there is no rotating parts in a transformer, so the mechanical losses vanishes, and only there are electrical losses which are very less losses. Okay, so we will talk about these losses also. So the power, input power transformer is VPIP cos theta p, where the theta is the cos theta p is the power factor of the transformer. Keep in mind that the power factor of the transformer depends upon the load connected to the transformer. Okay, so you cannot tell about the power factor of the transformer until and unless you don't know about the load of a transformer. So in order to compute the power factor of a transformer, you must know about the nature of the load. Okay, that which type of load is connected. So if the load is resistive, the power factor will be unity. If the net connected load is capacitive, the power factor may be leading. And if the load is inductive, the power factor will be lagging. So you cannot comment about the power factor of the transformer unless you know about the load of the transformer, that what is the nature of the load and what are the exact load connected to the transformer. So this was the input power, and the output power can be written as V size cos theta is. Now in ideal transformer these two power are same, so we can write that P out is equal to what? Uh, we can write what? We can write V as Vp by alpha, and we can write I as alpha Ip. Okay. ये रिलेशन कहाँ से आया, ये मैंने आप लोगों को भी वाइट बोर्ड पे समझा दिया. सो अल्फा जो है अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आउटपुट पावर जो है दिस इज इक्वल टू वी पी आई बी कॉस थीटा, and VPIB cos theta is equal to the input power. So this slide actually shows that the input power and the output power of a transformers are equal in ideal transformer. Okay, so now let's suppose what we have. If we are given a load at the secondary of a transformer, so in order to calculate its effect on the primary side, so we have to transform this load to the primary. Okay, so how we will transform this load? So it is very simple. Okay, let's suppose this is ZL and it is equal to Vs divided by Vi. So at the primary side this will become what? ZL dash. And how we compute ZL dash at the primary side?
We know that Z is equal to Vs by Is, but when it comes to primary side, so Z dash will be equal to Vp divided by Ip. We also know that Vp is equal to alpha Vs and Ip is equal to Is by alpha. So Z dash will be equal to what? Vp by Ip. Vp can be written as alpha Vs and Ip can be written as Is by alpha. From where this relation comes, you can refer to the video recorded the whiteboard. Okay, whiteboard पे जब भी हमने इस equations को देखा, so ये two relation हमारे पास आ गए थे. So now putting this, so what it will become? It will become alpha square Vs divided by Is. So Vs by Is is equal to the load at the secondary. So once you reflecting the load to the primary, so you have just multiplied that load with the turn ratio of the transformer, with the square of the turn ratio of the transformer. Because alpha is equal to Np by Ns, so alpha square will be equal to what? Np by Ns whole square. So this is the relation how to reflect the secondary load into the primary of a transformer. Okay. Now we will use these relations in order to signify the importance of the transformer. Okay. So that's why we use transformer in distributions power system. Okay. So this is an example. What does actually this example demonstrate? This example signifies the utilization of a transformer in the distribution and in the transmission of power. Okay. So normally the power stations which are located far away from the load. Let's suppose consider an example. Take the Tarbela power station. The Tarbela power station is basically located in KPK near Sawabi. Actually the transmission, the generating station is far away from Islamabad. Okay, but the at Islamabad, as there is no power station. Okay, so we have to utilize the electricity, the power generated at the Tarbela power station, which is located far away from Islamabad. So for this purpose, we have to transfer, or we have to transmit that power to the Islamabad through transmission and distribution lines. Okay. Now what is happening at the generator station? Normally the generating station contains a lot of generators, number of generators. Now these generators operate in parallel due to technical and economical reasons. So the operation of these generators provide you huge amount of power which contain current, higher current and higher voltage. Okay. Now you know that the transmission lines are conductors, the distribution lines are actually conductors. Now if you are going to transmit the power through conductors, okay, and the power have more current, mean कि अगर आप लोग जो है हाई करंट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो the transmission lines will have resistance. Okay, it will have some I square R losses. So in order to reduce these I square R losses, you have to step up the voltage at the generating station and you have to step down the current. So upon stepping down the current at the generation station, actually what happens? The I square R losses significantly जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. So the reduction in the I square R losses is due to the usage of a transformer at the generating station. Okay. Now what happens at the consumption side? Once the power is transmitted to Islamabad, now the users in the Islamabad needs to 20 volts. Okay. So there are a lot of auxiliary instruments in the transmission lines, but we are only focusing on the transformer. So at the end user required a power of 240 volt single phase. So the
transformer that are outside your houses, that are fitted in the poles in the street of your society. So वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, the function of those transformer is to step down back the voltage to 220 volts and आपको जो कनेक्शन मिलता है वो आपको 220 वोल्ट सिंगल फेस का मिलता है, ठीक है. सो द यूटिलाइजेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्चुअली reduces the I square R losses and उससे क्या होता है कि आपके पास जो जितना पावर आप ट्रांसमिट करते हैं जनरेटिंग स्टेशन से, तो उसमें बहुत ही कम लॉसेस के बाद आपके पास जो पावर आता है उसमें लॉसेस बहुत कम होता है, ठीक है. सो दिस एग्जांपल एक्चुअली डेमोंस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर in the distribution and transmission lines. Okay, so in the first case you are given that a single phase power system consists of 480 volt 60 Hz generator supplying a load of 4 plus j3 ohm through a transmission line of impedance. This answer the following question about this system. पहले केस में आप लोगों को बताया गया है कि this is generating station which generates 480 volts. This is the transmission line's impedance, and this is the actual load connected to your generating station. So this is the connected load. This impedance is the impedance of the transmission line, and this is the generating voltage. Okay. So पहले केस में आप लोगों से पूछा गया है कि ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है, तो अगर आप ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या इस ट्रांसमिशन सिस्टम में, सो यहाँ पे आपके पास आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो क्या होंगे, ये आप कंप्यूट करें. दूसरे केस में आप लोगों को बताया गया है कि जनरेटिंग स्टेशन के बाद आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए और उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वो आपके वोल्टेज को स्टेप अप करेगा और करंट को क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा. और फिर कहता है कि लोड से पहले जो है आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जो आपके वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा और करंट को स्टेप अप करेगा. तो इससे होगा ये कि आपके ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, कम होगा. तो फिर आपसे उस केस में पूछा गया है कि फिर आप आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो कैलकुलेट करें. सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल. इफ यू हैव स्टडी द सर्किट एनालिसिस 2 कोर्स वेरी वेल, so then this is just a 2-second game. Okay, so what we will do, actually we have to add these two loads because the both loads are in the series, so we have to add these two loads. After adding these two loads we have to divide V by I is equal to V by Z, so we have to compute this I, and now this I flows through this resistance, so we have to compute I square R here. So this will be the power loss at the transmission line. Okay, so now let's compute this loss I square R. This is the second case. In the second case you have asked to use two transformer. The first transformer is a step up transformer. एक्चुअली ये क्या करेगा, आपके जनरेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, लेकिन चूंकि दिस इज ए ट्रांसफार्मर, सो जब ये वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तो इसने करंट को स्टेप डाउन करना है. सो इफ दिस इज द सिनेरियो, सो दिस आई लाइन करंट विल बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे अगेन उसने क्या किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है जिसने वोल्टेज को क्या स्टेप डाउन किया है. सो now how you can say that this transformer is a step up transformer and this transformer is step down transformer. Actually the number of turns at the primary are less and the number of turns at the secondary are more, so this is a step up transformer. Here the number at the primary is more and the number at the secondary are turns, number of turns की बात मैं कर रहा हूँ. This is very low, so this is a step down transformer. Okay, सो इस केस में आप लोगों ने ये जो यहाँ पे जो आई लाइन है वो कैसे कंप्यूट करना है. दिस इज वेरी सिंपल. आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लोड है इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लोड को जब आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, सो यू हैव जस्ट मल्टीप्लाई दिस लोड विद द टर्न रेशियो स्क्वायर.
सो जब आप इस लोड को टर्न रेशियो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो व्हाट यू विल गेट दी इम्पीडेंस हेयर, और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब आपने इसको कनेक्ट कर लिया तो आगे इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे वोल्टेज V1 है, I1 है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज V2 I2 है। So V1 I1 are given, N1 N2 are given, you have just to compute this I2, this secondary current। So ये secondary current जब आप लोगों ने फाइंड किया तो जितना secondary current लो कर रहे हो secondary current को इसके साथ क्या करें, I square R करें, यानी उसका स्क्वायर लेके R के साथ मल्टीप्लाई करें। This is one method of finding this line current, okay? So now let's come toward the solution. So पहले केस में तो we have simple compute the I through basic जो सर्किट के रूल है। So पहले केस में I line y is equal to V divided by Z line dash Z load। So ये आप compute करें, so you will get 90.8, you will get I square R losses 90.8 square और R line is 0.18, so 1484 watt। पहले केसेस में without utilizing the transformer, how many losses will occur in the transmission line? That will occur at 1.484 kilowatt. Okay. Now once you utilize the transformer in your transmission and distribution, so actually what happens? Now I have told you that first of all you have to reflect the load at the second transformer toward the first transformer. So this is the reflection. You have just multiplied the turn ratio. Now this is the load. Now the two loads are in the series. Just add these two loads. So this is the final load, and now you can